Hello everyone, welcome to the weekly LeetCode weekly contest physics to discussion session. So we will be discussing the first three problems of the session. So without any further ado, let's just start with the session. So the very first problem is an easy one with an easy tag of 3 points, points that intersect with cars. So the problem basically says that there are some cars and which is like from 3 to 6, 1 to 5, 4 to 7. So how many points they are covering? So a very basic question. Suppose there is a number line and the number line is having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on to infinity. And what they have asked is suppose there is a car from 3 to 6. So it's 3 to 6. Then there is a car from 1 to 5. There is a car from 1 to 5. And then there is a car from 4 to 7. So it's 4, 2, 4, 5, 6, 7. So how many points they have covered? Like this point is covered by this car, this point is covered by this car, this point is covered by these two cars, this point is covered by all three. But basically, it does not matter whether it's covered by one, two, or three cars, just it needs to be covered. So you can see here 6 points are covered here. So we basically, sorry, 7 points, 3, 3, 6, 1, 7. Yeah, 7 points are covered here. So basically, what we need to do is we need to find such a number of points. So how we will do that? So see, there's a very basic stuff. If you would have noticed here only that um okay, the last one was why I guess, yeah. See, if what we can do is we can start from the starting. We can see if there is a car which is covering the points. We will take those number of points. For example, if we are considering this car, so it is covering 5 points. So we can add 5 to the answer. Then we can move to the next star which is starting, which is here at 3, and we can see that this region is already covered. So what we can check that whether the last star has already covered this particular point or not. If yes, then we can simply subtract this car's ending by this car's ending. So basically it will give us the extra points which this car is covering. So now our end is here. Now we can see which is the next car. We see it here. And here we can again see that the starting point of this car is already covered by another car. So what we can do is we can simply say that the starting point of the car won't be this, will be after the ending point of this particular car, which will be this point. So one answer to answer will be added by one. So basic stuff is it is a greedy problem where we can simply sort using the start duration, starting point of the car, and we can check if we get in the sorted order in the starting point of the car. We can simply check whether the next car, whether the current car starting point is already covered. If yes, then instead of taking this point as the starting point, we will take the ending point of the first previous car as the starting point of this particular car, because that only will be the region which will be covered by this particular car, because rest of the region would already be covered by this particular car. अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट कार ने फिफ्थ तक को कवर कर लिया था, अब सेकंड कार की वो स्टार्ट थर्ड से हो रही थी, बट सिंस फिफ्थ तक ऑलरेडी कवर हो गया है, तो इंस्टेड हम ये बोलने की कि ये कार थर्ड से स्टार्ट हो रही है, हम क्या बोलेंगे कि कार एक्चुअली सिक्स से स्टार्ट हो रही है। तो इसको बोलने का सिंपल तरीका क्या रहेगा कि अगर हमने स्टार्ट टाइम से सॉर्ट कर दिया तो हमें पता है कि हमारी जो प्रीवियस वाली कार है जो स्टार्ट टाइम से सॉर्ट हुई है, तो वो कहीं ना कहीं या तो इससे पहले खत्म होगी या तो इससे बाद खत्म होगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके बाद स्टार्ट हो। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी कार नहीं होगी जो इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट के बाद स्टार्ट होने वाली है। हमें सिर्फ एंडिंग पॉइंट चेक करना होगा। तो बेसिकली वी कैन डू कि हम सॉर्ट कर देंगे और हर पॉइंट पे ये चेक करेंगे कि इस कार का पर्टिकुलर जो ये पोजीशन है ये ऑलरेडी कवर्ड है या नहीं। अगर है तब हम बोलेंगे कि जहां तक कवर है उसको मतलब उसके आगे से ले लो। ये थोड़ा बेटर कोड में आएंगे, हम समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली कोड मैंने जावा में किया है, बट यू कैन डू इट द सेम इन सीपीपी। सबसे पहले तो सॉर्ट किया है, जो कि बहुत सिंपली सॉर्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट टाइम। देन मैंने पिछले प्रीवियस का एंड पॉइंट जैसा मैंने कहा था वो रखा है एंड नाम के वेरिएबल में। एंड मैंने जस्ट चेक किया है कि करंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो एंड से ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी कवर्ड नहीं है वो एरिया, तब तो आंसर में हमने जितना वो एरिया है वो हमने ऐड कर दिया और एंड को इस वाली कार का एंड बता दिया। बट नहीं, अगर वो एंड वाला इस वाली से अगर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट को ऑलरेडी कवर कर रहा है, जो कि ये पर्टिकुलर केस है कि हाँ ऑलरेडी कवर कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि
यार ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम स्टार्टिंग पॉइंट इसके आगे वाले पॉइंट को बता देंगे। तो यहाँ पे एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट हमने किया था, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट। तो फिर बेसिकली +1 क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि +1 करने का मतलब वही था कि हाँ, अगर हम n-1 वाले पॉइंट को, n+1 वाले पॉइंट को हम ये बता सकते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और वाई वी हैव टेकन मैक्स इज 0, बिकॉज अगेन ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसके एंडिंग पॉइंट से भी बाहर हो। तो फिर अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो फिर दिस माइनस दिस, हमें दिस माइनस दिस हमें निगेटिव मिल जाएगा, तो हम निगेटिव तो नहीं आंसर में ऐड करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने एंड को भी मैक्स लिया है कि एंड कॉमा, और जो भी जिसका भी एंड ज्यादा है, मतलब हो सकता है पिछला ही जो पॉइंट है उसका एंड ऑलरेडी ज्यादा था, तो इस वाले एंड का हम लोग को, और इस वाले एंड को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। So yeah, this was about the question. अगर if you still have any doubts, put in the comment box. I will try to answer all of your doubts, and we will move to the next question. तो yes, first question was quite easy. बेसिकली स्टार्ट टाइम से हमने सॉर्ट किया और हम जस्ट चेक करते गए कि अभी जो करंट नेक्स्ट करंट इंडेक्स का जो स्टार्ट पॉइंट है वो ऑलरेडी कवर्ड है या नहीं। अगर है तो हमने प्रीवियस इंडेक्स का एंड पॉइंट कंसिडर किया, और नहीं तो करंट इंडेक्स से स्टार्ट पॉइंट किया तो हमने मूव ऑन किया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ अ सेल इज रीचेबल एट अ गिवन टाइम। तो ये और ज्यादा इजी प्रॉब्लम है, मतलब टैग इसका मीडियम है, बट ये बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, if you have read the problem, so you can pause the video and read the problem if you haven't, and if you have read the problem I will start with the explanation। बहुत इजी है। एक स्टार्ट पॉइंट दिया है, एक एंड पॉइंट दिया है, और बोला है कि हम ऑटो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नाउ जस्ट टेल मी, इफ यू कैन मूव इन ऑल इट डायरेक्शंस, so what is the minimum number of steps you need to reach a point? Think of it. सोचो, वीडियो पॉज करो, थिंक ऑफ इट, राइट डाउन इन कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ moves you need to make to reach the final point from starting point if you can move in all eight direction. 1, 2, 3. Now I'm coming to the answer. So the answer is actually the difference of the number of row or column. Since here is the number of row is 3 and the number of column is 1, 2, 3, 4, 5. So I will be requiring 5 steps to reach start to finish. How? I will show you here. Let's just clear the whiteboard. And so yeah, suppose this is a grid given to us. I'm quite bad at drawing, but yeah, and there are some rows, some columns. Yeah, so now suppose we are here and you are saying me please reach here, so I will be saying कि यार मुझे यहाँ पे आने में सिर्फ तीन पॉइंट्स लगेंगे, and in third times I will go horizontal, so I will reach here in 3 points. Say any point. Let's just say here, यहाँ आने में मुझे कितने पॉइंट्स लगेंगे, सो आई विल से द नंबर ऑफ रोज का डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स का डिफरेंस 3 है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स का डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ रोज का डिफरेंस 3 है, तो मुझे 3 पॉइंट्स लगेंगे। कैसे? फर्स्ट टाइम मैं डायगोनल जाऊंगा, सेकंड टाइम डायगोनल जाऊंगा, थर्ड टाइम हॉरिजॉन्टल। टेक एनी पॉइंट, इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैक्स ऑफ नंबर ऑफ रोज का डिफरेंस और नंबर ऑफ कॉलम का डिफरेंस। सो सिंपली हमें यही करना है, हमें ये डिफरेंस निकालना है विच विल बी मैक्स ऑफ रोज का डिफरेंस है, कॉलम का डिफरेंस, और उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहेगा, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स उससे ज्यादा है तो आंसर विल बी यस, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स उससे कम है तो आंसर विल बी नो। और ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये देखो, सपोज दे आस्क मी टू रीच दिस पॉइंट इन 3 नंबर ऑफ स्टेप्स, तब तो मैं बड़े आराम से पहुंच सकता हूँ। सपोज दे टोल्ड मी कि यार 3 नहीं 4 नंबर ऑफ स्टेप्स पे जाना है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो 1, 2, 3, 4। अगर दे सेड कि 5 नंबर ऑफ स्टेप्स में जाना है तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, sorry, yeah, it's 1, 1, 2, 3, 4, so it's 1, 2, 3, 4, 5। if they say 6 number of steps में जाना है तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। so if they say it any number of steps, it is possible, because I will simply go one step ahead, one step below, and come again. So it every step is possible if the number of steps given is more than the difference, more than the shortest distance between them. Now, so yeah, this was the problem. There is just one simple edge case. Suppose the point is given as the same, like starting point is this and ending point is this as well. So in this particular case, the distance will be 0. But
if their distance given distance is 1, so it is greater than 0, but you cannot come here at one step because you will be requiring at least two steps. So yeah, if the points given are same and the given distance is 1, so in that particular case it will be no. Otherwise, just simply check the distance between them, and if the given steps are more than that, print yes. So yeah, very easy. A, B, and then max of A, B should be the distance. One edge case, that if it is 0 and the given distance is 1, then return false. Otherwise, if the given distance is more than the minimum distance, then simply print yes. Otherwise, no. So yeah, it was even simpler than first question, in fact. Now moving to the third problem, which is minimum moves to spread stones over grid. This is another easy problem. Like, it's having a medium tag, but it's pretty simple recursion. So take your time to read the problem, and if once you have done reading the problem, I will explain you the problem. Okay, I expect that you have read the problem. If yes, so I will again make a grid. So the problem says that there is a grid given to you. It was already created. Great. There's a grid given to you, which is a 3 by 3 grid. Make sure to read the problem carefully. It's not n by n, it's just 3 by 3. And what will be the case? Suppose let's take the second example. It is 1, 1, 1, 3, 3, 0, 0, 0, and 0. So what are they saying is there will be a grid given to you which will have a sum of 9. So there will be some elements which can be 0. So what you need to do it, you need to make them 1. To make them 1, what you can do is you can take a carry from other element. Like, there is a 3, you can ask him to give 1 to it, and it will become 2. Similarly, it is 0, you can ask to give him, it will be become 1. Then you can ask him, it will become 1, it will become 0, and again this will become 1, and this will become 1 as well. Yeah, but what is the situation that since this one is giving to this, so it will be requiring one step to move. Suppose if this 0 would have asked this 3, please provide me a number of 1. So what will be the case? It will go through this direction, then this direction. So basically the carry or the some one number can go only towards left, right, or up or down in one particular step. So if it want to reach two steps ahead, so it will be requiring two moves. And the question asks for the same, that you need to print the minimum number of moves required. So for example, if this 3 will give to this 2 and this 3 will give to this 2, you will get a minimum answer of 4, because it will be requiring one step to give to this, one step to give to this. It will be requiring one step to give to this and one step to give to this. So the minimum number of answer will be 4. But suppose what happened, that this 3 is providing 1 to this, and this 3 is providing 1 to this. So already it's 4, and this 3 is providing this 1 to this, so it will be 2 again, and this 3 is providing this 2. So basically, their answer could be 8 as well. So we want to find minimum answer. So it's a pretty simple problem. You can try BFS, DFS, something you might argue that it might be possible to BFS or DFS, but I tried that particular solution as well. मेरे लिए BFS या DFS work नहीं किया उतना. So what I did is I did the recursion and I tried every possibility. So if you know about recursion, it's pretty simple. You need to try every possibility. So मैंने क्या किया? I started with 0, 0. I moved, since there was a non-zero number, so I moved to the next position. Again, there was a non-zero element, so I moved to the next position. After reaching here, what I did, I tried putting 1 here from every possible value which is greater than 1. Here is a value greater than 1. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 करके यहाँ पे 1 किया, and steps कितने लगे, the absolute difference between their rows and column, which is 1. Then मैंने next step पे move किया. It is greater than 0. Okay, no problem. Continue. It is 0. So I will again try to take the values from everything. So I tried to take from this first. So it will be 1, and it will be 1 as well. I move to the next position. Here I try to take the value from all. So here there is no value greater than 1.
So I took the value from here. So it became 1, it became 2, and my answer is 3 as of now, 1 plus 1 plus 1. And then again, I moved to the next position. I found 0. I took 1 from here and 1 here, and my answer, final answer becomes 0. So this I stored in one particular answer. Then, since it is a recursion, so here the recursion will end. And once the recursion ends, I asked him that, hey, can you provide me a value, not from here, but from somewhere else, but there was no other element. So the recursion backtracked, moved to the previous state. It was already 1, so it moved to the previous state. It checked here, hey, um, can you provide me? So can you provide me? It basically asked, can anyone else provide me then other than this? So it said no, we cannot. So it moved to the previous state. So it asked, hey, can some element other than 2, this 2 can provide me? So it said yes, I can provide you. So it provided 1 to this particular element. And उसके बाद क्या हुआ, इसने दिखा यार कितने steps लग रहे, 2. So instead of adding 1, we added 2 to the answer. Then we move to the next step. In next step इसने पूछा कौन मुझे प्रोवाइड कर सकता है, तो सबसे पहले इसने कहा मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो कितने स्टेप्स लगेंगे, 2 स्टेप्स लगेंगे. So it said okay, no problem. Then we move to the next question and so on. So basically recursion कॉल करके हमने सारे combinations ट्राई किए. Whenever we found a zero, हमने ये चेक किया कि कौन से एलिमेंट्स है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. हमने उनसे ले लिया, उसको एक करंट वैल्यू में स्टोर करके रख लिया, नेक्स्ट कॉल कर लिया. वंस द कॉल इज फिनिश्ड, हमने उनको वापस दे दिया और हमने चेक किया कि हम अब किसी और से ले सकते हैं. दिस विल बी मच बेटर क्लियर इन द कोड, बट आई गेस समझ में आ गया होगा. बेसिकली रिकर्जन कॉल करो एंड फ्रॉम एवरी स्टेप वेयर देयर इज अ जीरो, just simply ask the elements which are more than one to provide a particular one, और उनसे one ले लो. Make the recursion call and once the recursion call is over, again give them the value and check करो कि उसके बाद किसी से value ले सकते हो क्या. और ऐसे ही करते हो minimum value find करो. I guess it will be more clear with the code. So yeah. Basically what we did is we called a recursion from 0, 0 and हमने पहले तो चेक किया कि अगर तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, सिंस वी वर मूविंग नेक्स्ट स्टेप, तो जब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे मतलब आउट ऑफ बाउंड, तो हमने 0 रिटर्न कर दिया. बट जब हम लोग सिर्फ मतलब रो के सॉरी कॉलम के इस पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट रो पे स्विच कर जा रहे हैं. सो इफ वी आर गोइंग आउट ऑफ द कॉलम, वी आर स्विचिंग टू द जीरो कॉलम ऑफ नेक्स्ट रो. And if we are moving out of the row, then we are moving to 0. And again, अगर greater than 1 वैल्यू है तब तो हमने सीधा ही नेक्स्ट पे मूव कर दिया था कि if the value is greater than 1, simply call the next recursion, नो प्रॉब्लम विद दिस. बट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब 0 है, तब हम क्या कर रहे हैं, हम हर वो वैल्यू चेक कर रहे हैं जहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 1. इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो हम पहले तो उसको माइनस माइनस कर दे रहे हैं, मतलब हमने उनसे एक ले लिया है. देन हमारे करंट इंडेक्स पे एक बढ़ा दे रहे हैं और हमने चेक किया ये लेने में हमें कितने लगेंगे. तो इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम, द एब्सोल्यूट डिफरेंस. एंड देन वी कॉल द रिकर्शन टू द नेक्स्ट. So after calling the recursion to the next step, again हमने चेक ओके हमने हमारे आंसर को अपडेट कर दिया कि जितना भी लगा होगा इस कंप्लीट रिकर्जन कॉल से, उसको हम लोग आंसर में स्टोर कर देंगे. हाँ, हमें टोटल इतना स्टेप्स लगे. एंड देन वी विल रिटर्न बैक. अच्छा ओके, 1 मैं अब तुझसे नहीं लूंगा, मैं किसी और एलिमेंट से लेने वाला हूँ. सो यू कैन टेक योर 1 बैक एंड आई विल अगेन बिकम 1 एंड आई विल अगेन गो एंड चेक कि ओके और नेक्स्ट ऐसा कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे मुझे ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिलेगी, एंड अगेन मैं उसके लिए रिकर्शन कॉल करूंगा. टेक योर टाइम, रीड द कोड, ट्राई टू ड्राई रन. अगर नहीं समझ में आया तो अगेन यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी सॉल्विंग ऑल ऑफ योर डाउट्स इफ एनी. बहुत सिंपल सा है, मतलब जिसे रिकर्जन की नॉलेज है, he will definitely get the solution. So yeah, I guess it was pretty simple problem. और द फोर्थ वन इज 8 पॉइंट प्रॉब्लम जो कि बहुत डिफिकल्ट है. आई विल ट्राई टू, अगर वो सॉल्व होता है तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा. बट आई गेस एज ऑफ नाउ we are done with the solving section. If you have any doubts, you can put in the comment. And if you are yet not following the 30 days code process series, then what are you waiting for? Just go and follow it on the channel. And I will see you in the next one.